Once again, I welcome you to this very special program on government certification for direct sellers. मैं अपनी presentation को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूंगा, जिससे कि जो मेरे listeners हैं, जो हिंदी में ज़्यादा comfortable है, वो समझ सकें, and also in English for all those people who are comfortable with English. So, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम जिस प्रोग्राम के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, शायद आपको मालूम भी हो, आपके काफ़ी सारे direct sellers, quite a few of your direct sellers are already certified under this program. And thanks to Mr. Mandar and team from NIJIC who has made this possible. मंडार साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस इनिशिएटिव को बहुत अच्छे तरीके से अपनी कंपनी में रन किया है, और काफ़ी सारे आपके डायरेक्ट सेलर्स हैं जो इस वक्त सर्टिफाइड हैं अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो ये प्रोग्राम है क्या और इसका क्या फ़ायदा है और ये आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आपको एक ब्रीफ जानकारी मैं दूंगा. उसके बाद फिर हम आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे. विल टेक योर क्वेश्चंस आफ्टर द सेशन इज ओवर. सो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा. हम कौन हैं. हमारी कंपनी का नाम है स्किलेड इंडिया, एंड वी आर अ जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ कुंस्कैप्सकोलन. ये एक स्वीडिश कंपनी है, और मानव रचना एक ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है नॉर्थ में. जो लोग नॉर्थ से मेरे को सुन रहे हैं वो जानते होंगे मानव रचना को. इट्स अ बिग educational setup in northern India, Manav Rachna, and jointly with National Skills Development Corporation, entire operations are being done, and our focus is skill development. And हमारा collaboration है राशि के साथ, जिसका कि ये प्रोग्राम है Retailer Association Skill Council of India. It's a body which has been set up by Government of India की सेटअप की हुई बॉडी है. मैं एक्चुअली पहले NSDC में था, मैंने ही सेटअप किया था इसको, राशि को. I was a founding member at NSDC, और now I am subscribing to their programs. और ये स्किल इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किल इंडिया मिशन आपने सुना होगा, उसके अंडर सारे प्रोग्राम्स हैं. और राशि जो है वो एक कंसोर्शियम है, इक्विटी पार्टिसिपेशन, करीब 10 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है और राशि को क्रिएट किया है. तो राशि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी हुई बॉडी है जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जॉइंट वेंचर में चलती है, और इनका काम है स्टैंडर्ड सेटिंग, असेसमेंट और सर्टिफिकेशन. सो राशि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर द रिटेल इंडस्ट्री, डूइंग द असेसमेंट्स and also giving the certificate. And we have a tie-up with them, and this particular program is under this tie-up which I just now described to you, right? So it's a government certification which will come through Retailer Association Skill Council of India, and we are the facilitators for making it happen for you. All right. So ये प्रोग्राम जो है ये सरकारी प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, और आप डायरेक्ट सेलर्स के लिए बनाया गया है. राशि के द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन है, और हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में राशि को. मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स बताना चाहूँगा. लेट मी गिव यू सम मोर डिटेल्स अबाउट द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम. सो द फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज, पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोग्राम है. इट्स अ कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोग्राम. आपको अपने घरों से स्टेप आउट करने का कोई ज़रूरत नहीं है. यू नीड नॉट स्टेप आउट ऑफ योर होम्स टू डू दिस प्रोग्राम. एंड इसका जो असेसमेंट है वो भी आप अपने घर पे बैठ के दे सकते हैं. आपको कहीं बाहर स्टेप आउट करने का ज़रूरत नहीं है. सो कम्प्लीटली ऑनलाइन, completely from your home office या home, wherever you are, you can attend this program, give the assessment and do it. And ultimately what you will get is an assessment certificate from the Government of India. So completely online, taking the training, giving the assessment, all at home or in our office. And as it was told to you in the beginning, that this program is only and only for IDSA members, and there is a scheme by Government of India called recognition of prior learning. ये आपको थोड़े से बड़े-बड़े नाम लग रहे होंगे. You might be feeling what is this big names, recognition of prior learning, what does it mean? So just to give you a background, I think most of you who have been in the industry, आप में से जो लोग इंडस्ट्री में रहे हैं उनको ध्यान होगा कि at one point the industry was under tremendous pressure and government was about to ban
द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप लोगों को, बहुत से लोगों को ध्यान होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद होने की कगार पे थी। वो किस लिए था? व्हाई वाज इट? बिकॉज देयर वाज सर्टेन फ्रॉडुलेंट कंपनीज, पॉन्जी स्कीम कंपनीज, आपने सुना होगा उनके बारे में, जो इस इंडस्ट्री को खराब कर रही थी, लोगों को चीट कर रहे थे। तो भारत सरकार ने तंग आके ये फैसला कर लिया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम बंद कर देते हैं, जिससे कि ये पॉन्जी स्कीम, फ्रॉडुलेंट स्कीम्स जो मार्केट में चल रही हैं वो बंद हो जाएं, दे शुड गेट क्लोज्ड। बट देन द genuine direct selling companies came forward, went to the government and spoke to them about how they can be differentiated. उनको कैसे जो genuine direct selling companies हैं उनको कैसे differentiate किया जा सकता है, जिससे कि वो fraudulent companies अलग की जा सकें और एक recognition आए इन companies का, जो कि genuine companies हैं, उनके direct sellers का recognition आए, वो कैसे किया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक स्कीम निकाली, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। एक्चुअली ये आपके सेक्टर पे भी एप्लीकेबल है और बहुत सारे सेक्टर्स और पे भी एप्लीकेबल है। पर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का मतलब ये है कि आप एक एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलर हैं, आप इंडस्ट्री में कुछ समय से काम कर रहे होंगे, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ लोग हो सकता है 10 साल से भी हों, कुछ लोग 25 साल से भी हो सकते हैं, ज़्यादा समय से भी हो सकते हैं। आपको एक बहुत अच्छा तजुर्बा है, यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस अबाउट योर इंडस्ट्री। So all that government is doing is recognizing your prior learning, your prior experience. आपको जो पहले एक्सपीरियंस है उसको रिकॉग्नाइज कर रही है। और हाउ इज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग इट? बाय गिविंग यू अ सर्टिफिकेट, अ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। सो गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि आप एक लंबी चौड़ी ट्रेनिंग अटेंड करिए और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं। आपकी जो लर्निंग है, ऑल दैट यू नो, व्हाट यू नो ऑलरेडी अबाउट योर इंडस्ट्री, about your work, it is recognizing that particular thing, evaluating you, and then giving you a certificate. It's a very short program, very short program to give you a certificate. बहुत छोटा प्रोग्राम है आपको एक सर्टिफिकेट देने के लिए। और ये भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन्वॉल्व है, स्किल इंडिया का प्रोग्राम इन्वॉल्व है, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन राशि इन्वॉल्व है और इनैजिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एज अ वेरी एक्सक्लूसिव एंट्री कर रहा है। सो जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोग्राम है, दिस इज अ प्रोग्राम टू सेपरेट जेन्युइन एंड लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलर्स फ्रॉम द फ्रॉडुलेंट पिरामिड पॉन्जी स्कीम डायरेक्ट सेलर्स। आपको एक एक अलग से एक सर्टिफिकेशन मिलेगा जो आपको एक डिफरेंशिएट करेगा जो फ्रॉडुलेंट स्कीम या पॉन्जी स्कीम्स रन कर रहे हैं उनसे। और आप एक बहुत प्रिविलेज्ड हैं, आपकी कंपनी आईडीएससी की मेंबर है और आपको ये प्रिविलेज मिला है। ये सबको 14-15 कंपनीज हैं आईडीएससी की और वो इसका बेनिफिट उठा रही है, आपकी कंपनी उसमें से एक है। आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। एक तो सर्टिफिकेशन तो ठीक है आपको मिलेगा, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपने एक फंडामेंटल्स जो एक डायरेक्ट सेलर के है उसके ऊपर आपको एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे, उसके ऊपर आपको एक एक्सपोजर मिलेगा इस प्रोग्राम के द्वारा। आपकी कंपनी ने आपको बहुत सारी ट्रेनिंग दी होंगी, बहुत सारी ट्रेनिंग दी होंगी और ट्रेनिंग देती आ रही है और देती भी रहेगी आपको। पर ये प्रोग्राम ऐसा है जो कि शायद आपने अटेंड नहीं किया हो, जो आपको ये बताएगा कि भारत सरकार आपसे क्या चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप में क्या स्किल्स देखना चाहती है, जिससे पहले कि वो आपको रिकॉग्नाइज करे। तो आपकी जो डायरेक्ट सेलिंग की स्किल्स हैं वो अच्छी तरह से और शार्पन होंगी इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। तो दो चीजें हो रही हैं, एक सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और जो आपकी डायरेक्ट सेलिंग की स्किल्स हैं उनको आप और फर्दर शार्पन कर सकते हैं। सो इट इज गिविंग टू बेनिफिट्स, वेरी क्लियरली टू बेनिफिट्स। वन इज दैट यू आर गेटिंग अ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट एंड सेकेंडली यू आर शार्पनिंग योर skills as a direct seller as per defined by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, आपके कुछ अगर क्वेश्चंस होंगे तो हम बाद में लेते हैं, आप उसको डाल सकते हैं Q&A के अंदर एंड हम उस क्वेश्चंस को लेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो इसको लेके मैं अभी आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब आप ये सर्टिफिकेट देखिए, जस्ट सी दिस सर्टिफिकेट, कैन यू सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगो ऑन इट? आप भारत सरकार का लोगो देख सकते हैं जो बीच में लगा हुआ है। इसके स्किल इंडिया का लोगो है, एनएसडीसी का लोगो है, इनएजिक का लोगो है, राशि का लोगो है।
जो कंपनीज आपकी लाइफ में मैटर करती हैं उन सब के लोगोज लगे हैं इसके ऊपर। और एक ये सर्टिफिकेट है जो कि बहुत एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेट है, इस पे आपका नाम लिखा होगा और इसमें क्यूआर कोड भी है, आप देख रहे होंगे। इस क्यूआर कोड के ऊपर अगर आप कोई भी स्कैनर रखेंगे, इफ यू पुट एनी स्कैन योर माइक्रो योर सो स्मार्टफोन विद अ स्कैनर, एंड इमीडिएटली ऑल द डिटेल्स व्हिच आर ऑन द सर्टिफिकेट विल कम। अगर आप इसके क्यूआर कोड के ऊपर अपना स्कैनर रखेंगे, मोबाइल फोन का स्कैनर रखेंगे, तो जो भी डिटेल्स यहाँ पे हैं वो आपके मोबाइल फोन पे आ जाएंगे। और जानते हैं कहाँ से आएंगे? यू नो फ्रॉम वेयर इट विल कम। योर डिटेल्स विल गेट रजिस्टर्ड इन द गवर्नमेंट रजिस्ट्री। गवर्नमेंट डेटाबेस में आपका नाम चला जाएगा। और जिस तरह से आपका आधार कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, आपका वोटर आईडी कार्ड है, वो कहाँ से है? वो एक गवर्नमेंट डेटाबेस है जहाँ पे आपका नाम registered है. You are registered on the government database, whether it's your Aadhaar card, your driving license, your voter ID, your passport. So this is again an identity relating to your work as a direct seller. ये एक आइडेंटिटी है जो कि आपको दी जा रही है भारत सरकार के द्वारा उनके डेटाबेस में एंट्री करके कि आप एक रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर हैं, भारत सरकार के पास रजिस्टर्ड है। और आपको पता है कि हम इंडियंस की मेंटालिटी क्या है। यू नो द इंडियन मेंटालिटी, इफ देयर इज एनीथिंग विद अ गवर्नमेंट स्टैम्प, पीपल बिलीव इट। लोग कंपनी की मोहर देख के विश्वास नहीं करते। पीपल डोंट बिलीव बाय लुकिंग एट द स्टैम्प ऑफ एनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी, बट दे बिलीव if the government of India logo is there. Immediate belief come without questioning. कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा जब वो एक सर्टिफिकेट आपके पास देखेगा। आप दिखाएंगे कि देखिए ये मैं हूँ, ये मेरा सर्टिफिकेट है, भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित हूँ। इमीडिएटली आप रिकॉग्नाइज हो जाएंगे एज अ जेन्युइन डायरेक्ट सेलर। एंड टुडे वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ ऑनलाइन। यू मस्ट बी डूइंग लॉट ऑफ योर बिजनेस वाया ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स आर अ सेपरेट स्टोरी। ऑनलाइन फ्रॉड्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता कि जो बात कर रहा है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो फॉर योर कस्टमर्स एग्जिस्टिंग एंड योर फ्यूचर कस्टमर्स, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो आपके नए कस्टमर्स हैं, यू कैन शेयर दिस सर्टिफिकेट विद देम एंड क्रिएट इन देयर माइंड्स अ ट्रस्ट, अ फैक्टर ऑफ ट्रस्ट कि आप जो है जेन्युइन डायरेक्ट सेलर हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सिर्फ गिनी चुनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए है, आईडीएसए कंपनीज के लिए है और आप जैसे एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलर्स के लिए, सबके लिए नहीं है। सिर्फ 14 कंपनीज है आईडीएसए की जिनको इस सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी दी जा रही है, सबको नहीं है। आपको इसका एडवांटेज लेना चाहिए। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस सर्टिफिकेट। इट इज नॉट अ बिग एफर्ट, राइट? लेट मी मूव फॉरवर्ड। What is the process of getting this certificate? क्या प्रोसेस है क्या इट्स 3 सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। तीन, सिर्फ तीन। देयर आर ओनली 3 स्टेप्स, जिसमें 2 स्टेप्स में तो आपको एक्टिविटी है। देयर आर ओनली 2 स्टेप्स इन विच यू हैव टू टेक एन एक्शन, एंड द लास्ट स्टेप इज sort of automatic. So what is the first step? First step is that you will have to take a 5-hour online orientation program. आपको करीब करीब 4.5 से 5 घंटे का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ऑनलाइन, जो कि इंग्लिश और हिंदी आपकी चॉइस है, आप किस में करना चाहते हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में कर सकते हैं। अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं, आप इस प्रोग्राम को 5 घंटे की ओरिएंटेशन को करिए। और इस 5 घंटे की ओरिएंटेशन के लिए आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। For doing this 5-hour program, you will be given a span of 30 days, up to 30 days. I have seen people doing this program in 1 day also. Just 1 day. Somebody started this program at 8 o'clock in the morning and was done by afternoon and ready for assessment. मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतनी स्पीड से करिए. So depending on your availability of time. So today you have half an hour, give half an hour. Tomorrow you have some more time, give more time. Third day you do not have any time, don't give time. Fourth day come, do for 15 minutes. So you can do in bits and pieces. आप उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके कर सकते हैं. किसी दिन आधा घंटा, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन 10 मिनट, 15 मिनट.
जैसा समय हो आपके पास से लगाइए, पर खत्म करिए उसको 1 महीने के स्पैन में, बहुत आराम से हो जाएगा। इट्स अ बिग टाइम। 5 घंटे का कोर्स, 1 महीने का समय, 5 hours program, 30 days of duration. I mean, the period in which you can finish this orientation, right? And most important part is that the content of this program, मैं आपको शुरू में बता रहा था कि भारत सरकार ने कुछ निर्धारित किया है कि डायरेक्ट सेलर्स को क्या पता होना चाहिए, एंड उन्होंने इसको एक नोटिफाई किया है जिसको कि नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड फॉर डायरेक्ट सेलर्स कहते हैं, राष्ट्रीय मानक डायरेक्ट सेलर्स के लिए। नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर डायरेक्ट सेलर्स, या राष्ट्रीय मानक भारत सरकार की तरफ से निर्धारित, जिसमें वो सब चीजें लिखी हुई हैं कि डायरेक्ट सेलर को, करीब 70 पेज का डॉक्यूमेंट है वो। या तो आप उस 70 पेज के डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिए या आप ये वीडियो देख लीजिए, आपकी मर्जी है। वीडियो आपको बहुत ही आसान तरीके से, इट्स अ वेरी सिंपल वीडियो, वेरी इजी वीडियो टू अंडरस्टैंड बिफोर यू आर रेडी टू गिव दैट असेसमेंट। ऑलराइट। तो पहला मैंने आपको बताया स्टेप ये कि आपको 5 घंटे का ओरिएंटेशन है जो 30 दिन के समय में अपने हिसाब से इसको करना है। दूसरा स्टेप ये है कि आप जब कोर्स खत्म कर लेंगे तो आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट देना होगा। इस ऑनलाइन असेसमेंट का ड्यूरेशन रफली 30 से 40 मिनट के बीच में या 1 घंटे में आप खत्म कर सकते हैं, आपकी स्पीड के ऊपर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे होंगे। आपकी चॉइस है कि आप इंग्लिश वाला पार्ट से आंसर करें या हिंदी वाले पार्ट से आंसर करें। और आप जब उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपका असेसमेंट हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब ओरिएंटेशन जब आप कर रहे होंगे, व्हेन यू आर डूइंग द ओरिएंटेशन, the kind of questions which will come in final assessment are there also attached to every module। 8 मॉड्यूल है उसके अंदर, 8 चैप्टर्स हैं ऐसे मान लीजिए। हर एक चैप्टर में, हर एक मॉड्यूल के बाद क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस हैव बीन पिक्ड अप फ्रॉम द मेन डेटाबेस ऑफ राशि, जहां से आपका असेसमेंट होगा। तो अगर आपने ढंग से किया है, इफ यू हैव डन इट प्रॉपरली, इफ यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस प्रॉपरली, you will be able to do the final assessment without any problem। I have seen people getting 95% marks, 95%, 90%, 99% ऐसे तक मार्क्स लेकर आए हैं लोग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, they're all multiple choice questions, you have to just identify and pick and do it। Now one very important thing, बहुत जरूरी चीज एक ये है कि जब असेसमेंट दे रहे होंगे, असेसमेंट आप देखिए, कंटेंट तो आप अपने मोबाइल फोन से भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब एग्जाम देना होगा तो वो 45 मिनट के लिए आपको एक कंप्यूटिंग डिवाइस लाइक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए होगा जिसमें कि माइक्रोफोन और कैमरा दोनों हो। क्योंकि जब आप वो 45 मिनट 1 घंटे का एग्जाम दे रहे होंगे तो आपका माइक्रोफोन और कैमरा आपका इन्विजिलेटर बन जाएगा। ये एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट इनेबल्ड एग्जामिनेशन सिस्टम है। आपको ये थोड़ा चौंकाने वाली पॉइंट होगा। इट्स एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट इनेबल्ड एग्जामिनेशन सिस्टम। मतलब कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, आपके आसपास पीछे से कोई खड़ा हो गया या किसी के बोलने की आवाज आई तो ये रेड फ्लैग जनरेट करना शुरू कर देगा। या आप उठ के चले गए या आपने मोबाइल फोन को उठा लिया, वो सारी चीजें रजिस्टर करेगा आपका कैमरा और माइक्रोफोन। आपको चीटिंग नहीं करने देंगे, और आपने अगर ज्यादा उछल कूद करने का कोशिश किया एग्जाम के टाइम पे तो आपका एग्जाम टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए वो 45 मिनट आपको एक क्वाइट एनवायरनमेंट के अंदर एग्जाम को देना होगा। यू हैव टू गिव दैट एग्जाम फॉर फुल 45 to 50 minutes in a isolated corner without any sounds coming from the background and give the exam quietly। So it will not permit you to do any cheating, take consult notes, कुछ नहीं करने देगा आपको 45 मिनट तक। वो 45 मिनट आपको इकट्ठा बैठना होगा। ओरिएंटेशन के समय you can just move on anytime, do the course anytime, but giving the assessment has to be for those 45 minutes। 1 point एक ही जगह बैठ के एग्जाम देना होगा, आपको उठना नहीं होगा, नहीं तो आपका एग्जाम टर्मिनेट हो जाएगा। फिर आपको दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा, दोबारा पैसे देने पड़ेंगे एग्जाम देने के लिए।
ऑनलाइन असेसमेंट भी आप घर से बैठ के देंगे। और तीसरा स्टेप ये होगा, जब आप ओरिएंटेशन हो जाएगा, आप असेसमेंट दे देंगे, तो बिटवीन 30 to 45 डेज आपका सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम से आता है तो थोड़ा समय लगता है, पर 30 से 45 दिन के समय में, बिटवीन 30 to 45 days, we are trying to work out with them to reduce it. In some cases it get reduced, but in some cases it doesn't happen. So but expect your certificate to come between 30 to 45 days. शायद ये आपको प्रोसेस क्लियर हो गया होगा. I am sure this process would have been clear to you, but if you have any questions, please write it to them in the Q&A. I'll answer them when we reach to that point. आप Q&A के अंदर क्वेश्चंस को लिख दीजिए, हम जब एंड हो जाएगा सेशन का तब आपसे बात करेंगे. मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा आपको ये बताने के लिए कि नेशनल स्टैंडर्ड्स डायरेक्ट सेलर्स के लिए क्या है, राष्ट्रीय मानक डायरेक्ट सेलर्स के लिए जो भारत सरकार ने निर्धारित किए वो क्या है. और आपको शायद ये पहली बार आप सच सुन रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलर्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड्स है, मानक हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्धारित किए हैं. National standards set by Government of India for direct sellers. Let me tell you about them. Right? So this particular national standard has been notified by Government of India. देखिए, कोई भी चीज को नेशनल ऐसे ही नहीं बोल दिया जाता. आपने सुना होगा there is a national flag, national bird. How does it happen? National anthem. You just can't add anything called national without government approval. So government gazette में this particular standard has been notified in the government gazette. Government gazette पे notified है ये डायरेक्ट सेलर. अच्छा, इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है स्टैंडर्ड को राशि ने, एनएसडीसी की जो एक यूनिट है, सेक्टर स्किल काउंसिल है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना है. मतलब क्या हुआ इसका? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सरकार ने पैसा दिया स्टैंडर्ड को बनाने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर ने मिलके ये निर्धारित किया कि जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनमें क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर ने निर्धारण किया. वो और कंपनियां कौन थी? वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ही थी. तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का कलेक्टिव विजडम कि क्या कॉम्पिटेंसीज होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए डायरेक्ट सेलर में, दैट वाज नोटिफाइड इनटू दिस 70 पेज डॉक्यूमेंट. और इसमें है क्या, व्हाट ऑल इज देयर, राइट? So there are 8 competencies, 8 things which are described, which are known, should be known to a direct seller. The first and the foremost thing is legal policies and procedures to start and run the business. आप एक प्राइवेट अपना छोटा सा बिजनेस रन कर रहे हैं, तो लीगल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या है उसके अराउंड आपको पता होने चाहिए. लीगल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू डू दिस बिजनेस. आपको बेसिक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए. आप सब एग्री करेंगे. लीगल पॉलिसीज क्या है आपकी कंपनी रन करने को, जीएसटी, वीएसटी, जितना टर्म शटर्म सब आपको पता होना चाहिए. उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या है आपको मालूम होनी चाहिए. आपको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में अच्छा से जानकारी होनी चाहिए. आप अपना बिजनेस को कैसे डेली रन करेंगे विद योर टीम, यू शुड नो. आपको पता होना चाहिए डेली बिजनेस ऑपरेशंस कैसे करेंगे. और सबसे जरूरी क्या है कि अपना नेटवर्क कैसे बनाएंगे, नेटवर्क रिलेशंस कैसे बनाएंगे अपने कस्टमर्स के साथ, अपने वेंडर्स के साथ, अपने डीलर्स के साथ. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बिजनेस नेटवर्किंग का है. कैसे नेटवर्क अच्छा तरीके से आप बना सकते हैं. इस वक्त कोविड का टाइम है, कोविड अभी गया नहीं है. हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी किस तरह से कोविड समय में रेलेवेंस है आपके लिए. आपको अपने आप को बचाना है सबसे पहले, फिर आपको अपने कस्टमर्स को देखभाल करनी है, अपने डीलर्स वेंडर्स को बचाना है. तो आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे उसके बारे में ये बातचीत की गई है इस छठे मॉड्यूल में. 7वां और 8वां बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए. इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर बिजनेस. कस्टमर नीड्स को कैसे अनकवर करना है. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स, आप अपना जो प्रोडक्ट नया आया है आपने कस्टमर को लिख के भेज दिया, कस्टमर लो भैया ये प्रोडक्ट आया है, आपको चाहिए तो आप ले लो. Any new product comes, you write to your customers, you reach out to them, this is a new product or this is the portfolio of the products, please take something.
It doesn't work like that. जो स्टडीज है वो बताती हैं कि अगर आप इस तरह से अपने कस्टमर्स के पास जाएंगे तो काफी बड़ा चांस है, स्कोप है कि आपका जो अप्रोच है वो फेल हो जाए, डील फेल हो जाए। तो आपको करना क्या चाहिए? यू हैव टू गेट इनटू अ डायलॉग और इंटरेक्शन विद योर कस्टमर, अनकवर देयर नीड्स। उनकी क्या जरूरतें हैं उनको समझिए पहले, उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करिए, तो आप देखेंगे सेल आपकी बहुत अच्छी होगी। और हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स के, बहुत सारी कंपनीज के वीडियो वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, ये बताते हुए कि इन 7वें और 8वें मॉड्यूल ने उनको, उनकी लाइफ को, उनके बिजनेस में किस तरह से हेल्प किया, बिजनेस को ग्रो करने में, इंक्रीज करने में। हाउ दीज मॉड्यूल्स हैव हेल्प टू इंक्रीज, you can go to our portal and see those testimonials by the various companies who have put up and saying that how it has helped them to increase their business, increase their money, increase their revenue, increase their earning. कैसे उन्होंने, कैसे increase हुआ उनकी earning में? By uncovering the needs of the customers in a proper way and positioning the products accordingly. हो सकता है आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट एक हाई एंड प्रोडक्ट की लेने की हो, पर वो खुल ना रहा हो आपसे, वो खोल ना रहा, आपने अपना लोअर पोर्टफोलियो के प्रोडक्ट्स उसके सामने पोजीशन कर दिए, जबकि उसका एपिटाइट जो था एक हायर एंड लेने का था। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं उसको चाहिए क्या, आप अपने प्रोडक्ट को मत पोजीशन करिए। ये 7th मॉड्यूल ये समझाता है आपको। 8वां मॉड्यूल आपको ये कहता है कि अपने बिजनेस में आप कैसे क्रिएटिविटी ला सकते हैं, इनोवेशन कैसे ला सकते हैं, आप थोड़ा हटके कैसे काम कर सकते हैं जिससे कि आप और डायरेक्ट सेलर से थोड़ा अलग अपने कस्टमर्स को नजर आए, ये उसके बारे में। तो पॉइंट ये कि 8 कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि नेशनल स्टैंडर्ड में है, और ये प्रोग्राम जो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम की मैं जो बात कर रहा था वो इन 8 को कवर करता है, जो कि 5 घंटे का एक प्रोग्राम है। और आपको मैंने कहा कि 1 महीने के अंदर आप उसको कर सकते हैं। यू कैन डू दोज 8 मॉड्यूल्स इन a period of 1 month, and they are all comprising of these national standards. आपके कोई क्वेश्चंस हो आप प्लीज नोट कर लीजिए, हम उसको आंसर करेंगे। हाँ जी राजीव सर, there are quite a few questions that are there in the box. Should we take those up or after the video? If they are relevant to what I have just now said, you can pick up 1 or 2 questions, important ones. Yeah, so there are some questions from the previous things that you have said as well. Okay. The first question is that, is IDSA a private or a government body? IDSA association है, it's an association of direct selling companies. You can go to IDSA website and get to know about it. IDSA actually is a global organization. In India they are operating as a unit, IDSA India, and some 17 or 18 companies are part of that, including your company in Ajay. It's an association. All right. Next is, what is the duration of this program? वो तो मैंने आपको बताया कि 5 घंटे का प्रोग्राम है। इट्स अ 5-hour program which you have to finish in 30 days. Will recap of orientation sessions be available? Because one day it may be too heavy to digest and 1 month is way too long. आपको प्लीज समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इट्स अ 5-hour program which you can finish in 30 days. आप आज 15 मिनट पढ़िए, you study for 15 minutes, tomorrow study for half an hour. So you have full 30 days to finish this program twice, thrice, as many times before you say I'm ready for assessment. इस प्रोग्राम को 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये कोई नहीं कह रहा है कि ये 5 घंटे आप एक दिन में करिए। आप प्लीज क्लियर रहिए, you don't have to do this 5-hour program in a single day. You have 30 days to finish this 5-hour program. And it's something like today you do whichever point you leave, next day when you join, it will start automatically from that point. तो आपका कोई ये नहीं होगा कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैंने कहाँ छोड़ा था, कहाँ से शुरू करना है, right? Next is, can we know some other companies that are registered with IDSA? So there's Oriflame, there is Enagic, Modicare, there is Blue Life. You just go to their website, there are some 18 companies who are part of that, all leading names.
And all of Next them, is- by the way, are taking certification under this. Next is, I only have 5 months of experience. Can I do this course? कर तो सकते हैं, पर प्रेफर्ड ये है कि कम से कम 6 महीना 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो अच्छा है. Yes, so at the moment, these are the relevant ones. Once right. you go ahead, I'll ask the rest All right. of them. Sure. Acha, okay. So let me show you a small video on what is National Occupational Standard, because it's a very important thing in the life of all the direct sellers, that there's something called National Occupational Standard notified by Government of India. Just look at this small video, just 2 minutes video. You will understand more precisely what national standards are. English mein hai, but I think you should be able to follow it. An introduction to qualification pack. National Occupational Standard on individual sales professional, self-employed Is retailer. the sound coming of the video? Yes, Mr. Let Mathur. us first understand Sound is- what is a National Occupational Standard. National Occupational Standards, or NOS, are standards that have been created by various sector skill councils constituted by NSDC. All these standards get endorsed and agreed by the industry leaders in their respective sectors. Occupational standards specify the standards of performance an individual must achieve when carrying out a function in the workplace. They also include the knowledge and understanding that an individual is required to possess to carry out that function consistently. They are applicable in the Indian and global context. Now that you know what National Occupational Standards are, let us proceed to understand the meaning of the term qualification pack. A qualification pack be quick to the job and to the compared to that job effectively. In addition to right form, the qualification pack sales professional retailer is a document comprises of 8. Rajiv sir, can you please check your internet? The voice is breaking a lot. Okay. Page 1 of the document talks I'll about change the the channel. identification details Yeah, now it's fine of this somehow. standard, Alright. definition of an individual Fine. sales professional, a brief job description and personal attributes required for the job. Page 2 lists all the applicable NOSs for individual sales professional or the self-employed retailer job role. Look at the various NOSs created for this. All right. So it was just a small video to give you some idea what it was slightly in a more technical term, but you need not worry. This program that we are talking of covers all this in a very, very simplified manner. So, okay, now let me proceed further and tell you the structure of this program. Although मैंने आपको बताया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कि एक पहले ऑनलाइन ओरिएंटेशन है, फिर असेसमेंट है, थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं. Let us see this program into 2 segments. As I said, it's bifurcated in 2 parts, 2 sections. First section is a 5 to 6 hours orientation divided in 8 modules. 8 मॉड्यूल्स में करीब 5 से 6 घंटे का प्रोग्राम है. इसको आप 1 महीने में कर सकते हैं. It's a 30-day duration that you have, and then you have an online assessment which you have to give. So आपको मैं, let me give you an idea about this, the first section first. What is this first section all about? Which is a 6-hour orientation. Just have a small glimpse here. The newly developed certification program for individual sales professionals is divided into 8 learning modules, each corresponding to a nationally designed competency for that job role.
Each module contains an introduction, sub-modules, sub-module quizzes, module end quizzes, and module end summation to enable learning. The modules in this program are Introduction Module, Legal Policies and Procedures to Start or Run Business, Perform Basic Accounting Practices, Knowledge of Products and Services, Customer in their module, rating their entire So आपने देखा कि जैसे कि ये प्रोग्राम हमने तो आपको एक सैंपल इसका इंग्लिश में आपको मॉड्यूल्स के नाम लिखे नजर आ रहे हैं, बट वी हैव अ हिंदी वेरिएंट कंप्लीटली इन हिंदी. सो डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, you can use the Hindi version. If you are comfortable in English, you can use the English version. So the whole program is divided into 8 modules. 6 घंटे का समय है, 5 से 6 घंटे में इसको पूरा करना है, और प्रोग्राम ड्यूरेशन 5 से 6 घंटे की है, पर जो करने का समय है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 1 महीने का समय है, आराम से उसको करिए. तो ये तो हो गया कि ऑनलाइन ओरिएंटेशन का ग्लिम्स क्या है. फिर उसके बाद बात आती है कि ये जो ऑनलाइन असेसमेंट है, The newly ऑनलाइन developed असेसमेंट किस तरह से होगा. जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इनेबल्ड सिस्टम है, और आपको बहुत ध्यान से ये एग्जाम को देना होगा, और आपको ये इंश्योर करना होगा कि व्हेन यू आर गिविंग दिस एग्जाम देयर शुड बी नो नॉइजेस, बैकग्राउंड नॉइजेस, और इवन मूवमेंट एट द बैक ऑफ यू. देयर शुड बी अ टोटल साइलेंस व्हेन you are giving this exam. Just see a small video and then we'll move forward. As the candidate completes the 8 modules, an assessment conducted by the Sector Skill Council will be activated. The final assessment is a series of multiple choice questions that are conducted online. You could take up the assessment exam from the comfort of your home or office. An artificial intelligence enabled system will auto monitor and auto control your assessment. During the assessment, you will not be allowed to talk, take phone calls, eat or drink, consult notes, discuss the answers with a third person, or have any loud noises or movement occurring in the background. All such auto recorded and of red flag and quality of results, your assessment can be terminated. Upon successful completion, a certificate will be skill action of India. So ये तो एक डिस्क्रिप्शन है. अनुप्रीति, are there any questions on this so far? Yes, sir. There are quite a few questions on certification. First one being, is this lifetime or do I have to renew it? So it's a lifetime certificate. There is no renewal unless the competency is described by the industry change. ये सर्टिफिकेट जो है लाइफ टाइम सर्टिफिकेट है, आपको बार बार इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है, और आपके पास एक पीडीएफ होगा, आपके पास जो कॉपी आएगी, अगर वो खराब हो जाती, यू कैन टेक द प्रिंट अगेन एंड अगेन एंड हैव a fresh printout with you. You can create multiple copies of that. So it's a lifetime certificate. You don't have to renew it. There is no renewal concept. Next is, after this 6-hour orientation session is over, how much time will it take for the assessment? Will it happen immediately, or will have a date that will that I need to get back to? Yeah, very good question. So सवाल ये है कि जब आप कोर्स खत्म कर लेंगे तो आपका असेसमेंट कितने दिन के बाद होगा. जब आप कोर्स खत्म कर लेंगे तो उसके बाद एक स्टेप होगा जिसमें कि आपको एक सरकारी फॉर्म फिलअप करना होगा.
सरकारी फॉर्म से मतलब है कि उसमें वो सारी फील्ड्स होंगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है। उसमें आपका नाम, आपका आपके फादर नेम, आपका आपका सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट, फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उन सबको आंसर करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको उसमें करनी होगी, आपको उसमें अपना ये आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास किस किस पर्टिकुलर, आपको अपलोड नहीं करना है, पर अपना कोई भी ड्राइविंग, कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी का आपको नंबर उसमें डालना होगा। इट कुड बी योर ड्राइविंग लाइसेंस, योर वोटर आईडी, योर आधार, व्हाटएवर यू हैव, एनी गवर्नमेंट, योर पासपोर्ट नंबर, कोई भी एक आइडेंटिटी का नंबर आपको डालना होगा। सो दैट फॉर्म विल टेक सम 15-20 minutes to fill up, and once you finish this form and submit that form, your program, then you get into a 4-day rest kind of a thing in which you can revise the content. जब आप ये फॉर्म सबमिट कर देंगे, जब आप कोर्स पूरा खत्म कर लेंगे, तो जब आप कहेंगे कि आई वांट टू प्रोसीड फर्दर, तो आपको एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिलअप कर देंगे। उस फॉर्म को जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको 4 दिन का समय मिलेगा, 4 days. After 4 days you will be given a date and time for your assessment. आपको डेट मिलेगी, नॉट टाइम, डेट मिलेगी, 4 दिन के बाद की एक डेट मिलेगी, और उस डेट पे आपके पास पूरे 24 घंटे का समय होगा। जो आपको टाइम कन्वीनियंट हो, आप लॉग इन करके अपना असेसमेंट दे दीजिए, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग है, चाहे वो दोपहर का समय है, चाहे शाम का समय है, मतलब 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक 24 घंटे में आप किसी समय भी जाके वो एग्जाम दे सकते हैं। उस तारीख को मिस नहीं कर सकते, वो जो 4 दिन के बाद की तारीख आई। Next is that during the exam, what happens if there's, power outage or internet issue? And also, can this exam happen on our mobiles? नहीं, मोबाइल पे तो आप असेसमेंट नहीं दे सकते। यू कांट गिव दिस असेसमेंट ऑन मोबाइल, इट हैज टू बी ऑन a computing device like laptop or a computer. In case there is a power failure or anything of that nature, internet outage happens, all that you have to do is call up our call center. We'll reinitiate your assessment. Immediately call up करिए, हमारी टीम उसको आपके लिए reinitiate करा देगी। You don't have to worry. ऐसा होता है, पर आपको आपको कॉल सेंटर नंबर अभी हम शेयर करेंगे, आप नोट कर लीजिएगा। And there are people who will listen to you immediately and get your exam restarted. There is another question, that is, the ID that they have is on their wife's name, but they want the online government certification in their name. Can they do that? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप जब एग्जाम देंगे तो आपका वो एग्जाम आपके नाम पे होगा, आपके वाइफ के नाम पे नहीं होगा। आपका आधार कार्ड क्या आपके वाइफ के नाम पे नहीं है ना? आपका पासपोर्ट आपकी वाइफ के नाम पे नहीं है। ये भी एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन है जो कि आपके नाम पे ही होगा। जब आप देंगे तो बिजनेस आपकी वाइफ के नाम हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? पर आप तो एक डायरेक्ट सेलर है जो इनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप एग्जाम दीजिए ना अपने नाम से, वाइफ के नाम से क्यों देंगे आप? You can give this exam in your own name because you are a direct seller working for, selling the energy products. The business may be in your wife's name. That's okay. Doesn't make a difference. All right. और बताइए. Next question, please. Are there any So more those are questions? all the questions so far. Okay. Let's move forward. So now comes the question: how is this certification program priced? आपको क्या पैसे देने पड़ेंगे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए? अब उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सस्ता प्रोग्राम है क्योंकि सरकारी प्रोग्राम है, इसमें सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग सारी कॉस्ट सब मिला के कुल जमा 500 रुपया फीस है। जस्ट 500 रुपीज इज नथिंग, प्लस जीएसटी 90 रुपए का जीएसटी लगेगा इसके ऊपर, और आपको ये प्रोग्राम का एक्सेस, ओरिएंटेशन और सर्टिफिकेशन दोनों की कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है। जस्ट 500 रुपीज, राइट, विच इज हार्डली एनी अमाउंट। प्लस इसमें फर्दर भी है, अगर नेटवर्क लीडर्स खरीदते हैं so they have an advantage of getting 20% extra over this. तो अगर आप बल्क परचेज करते हैं, आप नेटवर्क लीडर्स अपने ग्रुप के लिए करते हैं, तो सब ये प्रोग्राम आपको शायद 410 रुपए में पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। 20% एक्स्ट्रा लॉगिन्स मिलते हैं और सस्ता हो जाता है प्रोग्राम अगर बल्क परचेज की जा रही है।
बल्क परचेज की डेफिनेशन क्या है? 10 या 10 से अधिक. What is the definition of bulk purchase? 10 or more than 10. You get a 20%. So if you pay the money for 10, you will actually get 12 logins instead of 10. If you buy 100, you will get 120 logins. 20 will be free of charge. No money asked for it, but all those people will be going this program like the same way and get the certificate in the same way. So there is a monetary advantage to you. Up to you. कैसे भी आप करना चाहें. So there's a reward scheme, as I said, 20% margin for procurement for the network direct sellers. Up to you how you want to do it. Lot of direct sellers, network leaders have procured it for their network. It gives a cost advantage. So this was all about this program. Now let me show you a summary and then we'll take up more questions now. So इसको login करने के लिए there are two options. One is that you can go through Energic website and there is a link to this program, or you can go to Rasi website and reach out to this. But I think Energic link is open and all of you can log on to Energic website and enroll into this program. मैं आपको एक process भी दिखाऊंगा कैसे enroll करने का है after this. So just look at the summary of जितना मैंने आपको बताया उसकी एक summary का एक वीडियो है. इसको देखिए, 2-3 मिनट का वीडियो है. then पे बात करते हैं. Welcome to the Individual Sales Professional or Self-Employed Retailer RPL Certification Program. RPL, or the recognition of prior learning as it is commonly known, largely refers to an assessment process used to evaluate a person's existing skill sets, knowledge and experience gained either by formal, non-formal or informal learning. This certification program recognizes that the individual sales professional's prior learning and experience as a direct seller. Upon successful completion of the course, a certificate will be awarded by Retailers Association Skill Council of India, set up by National Skills Development Corporation under the Skill India mission of Government of India. In this program, the knowledge partner is Skillet India. The online program is so designed that learners will be able to map their current knowledge and skills as a practicing direct selling professional vis-a-vis the national occupational standards. These standards for the individual sales professional or the self-employed retailer job role have been set by Rasi in consultation with the country's leading companies engaged in direct selling. The program into online implementation mapped to the 8 national standards set job. Each has been converted to learning tool. Thus, 8 modules in the program map to competency. Each module is integrated with an online quiz which will prepare the learners for the final assessment by Rasi. For the video. I think after the video is over, if you can just briefly outline what it had said, that would be great for everybody. Sure, we'll do that. At the end of this program, an online examination has been aligned for awarding professional certification to the direct seller. The final assessment is a series of multiple choice questions. The learner could take up the assessment exam from the comfort of their home or office. An artificial intelligence enabled system will auto monitor and auto control the assessment. Once this assessment is successfully cleared, the direct seller will be awarded a certification by Rasi. This is a sample of the certificate that will be awarded. The exam is in both English and Hindi and processed by Rasi.
So before I take the questions, let me just recall it for you. मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ कि आप इनेजिक या राशि की वेबसाइट से लॉगिन करें, अपने आप को रजिस्टर करें इस प्रोग्राम के लिए, 500 रुपये की कोर्स फी पे करें, आपको 30 मिनट के अंदर लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएंगे, आप अपनी कोर्स सर्टिफिकेशन की जर्नी, लर्निंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो ये आप ईमेल आईडी है, इसको नोट कर लें, info@cadmin.in, या फिर आप ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा 9541400400, नोट कर लें प्लीज इसको, 9541400400। इस पे आप कॉल करके अपनी कोई क्वेरी, जैसे अभी कोई पूछ रहे थे कि एग्जाम देने हम चले और नेटवर्क फेल हो गया, नेटवर्क फेल्स, just call up this number, there is someone who will hear you out and will reinitiate your assessment. कैसी भी प्रॉब्लम है आपको, you can just call up on this number and get your queries answered. मैं आपको एक 2 मिनट का समय लूंगा, मैं आपको और दिखाता हूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता क्या है, फिर उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट and I'll show you how the registration happens. Either you can go via the from the Rasi website, or you can go from any of the Inagic website. Let me show you from Rasi where I normally enter, but you can go from Inagic website also. So when you reach to Retailer Association Skill Council, you will see a moving marquee. Click here. ऐसे आप देखेंगे नीचे चल रहा है, click here to explore the online programs. आप इस मूविंग मार्की पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आएगा क्लिक हेयर टू रजिस्टर. बहुत सिंपल है, राशि की वेबसाइट पे आए, वो मूविंग मार्की पे क्लिक किया, क्लिक हेयर फॉर रजिस्टर, और आपके सामने एक चॉइस आ जाएगी, बहुत सारे प्रोग्राम्स के नाम आ जाएंगे. अब आप देखेंगे सबसे पहला वाला चॉइस, ये आप पढ़ रहे हैं, आरपीएल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, डायरेक्ट सेलर एंड इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन. आप इस कैटेगरी में आते हैं. पहला ही वाला, पहला प्रोग्राम, पहला ऑप्शन, डायरेक्ट सेलर फॉर इंडिविजुअल सेल्स, और आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा. देखिए बड़ा क्लियरली कह रहा है, दिस कोर्स इज एप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट सेलर्स एसोसिएटेड विद आईडीएसए कंपनीज लाइक ऑरिफ्लेम, इनेजिक इंडिया, मोदी केयर, ब्लू लाइफ एटसेट्रा. जस्ट टू टेल यू कि आप आईडीएसए कंपनी के मेंबर होने चाहिए, और आप यस करेंगे तो ये जो वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अवेलेबल है. ये वाला मैंने अभी इंग्लिश में चलाया था, ये हिंदी में अवेलेबल है, आप इनको देख सकते हैं, कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं उनको देख सकते हैं. और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आई एम इंटरेस्टेड टू डू बल्क परचेज. जो लीडर्स हैं वो इस ऑप्शन को ले सकते हैं, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस ऑप्शन को ले सकते हैं. आई एम एन इंडिविजुअल. ठीक है, आप ओके करिए. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको अपने आप जनरेट करेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं उसको टाइप कर देता हूँ आपके लिए, जिससे कि, पर इसमें आपका ओटीपी वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होता है, आपका मोबाइल का और आपका ईमेल का, दोनों का एक वो ओटीपी के द्वारा. Oh, let me enter it again. I entered probably correctly. देखिए ये आपके नजीक के ही कोई हैं, उन्हीं के नाम पे है, पर इसमें आप देखिए जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के नाम होते हैं वो अपने आप लिखे हुए आते हैं. मैं एक मिनट आपको वो दिखाना चाहूंगा पहले, बिफोर आई गो इनटू दिस. सर रिफ्रेश कर लीजिए. अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेट मी जस्ट मूव फॉरवर्ड. When you go to the next button, then you will find that direct sellers के हिंदी या इंग्लिश वेराइंट आप कौन सा लेना चाहते हैं, whether English variant or हिंदी वेराइंट. मान लीजिए आपने कहा मैं हिंदी वेराइंट, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू must be using Amazon buy. So वहाँ पे भी जैसे आता है add to cart, you have to just click on add to cart, whether you want Hindi or English, you do add to cart, right? It will say okay, it added to your cart, and then you say next. एक सामने एक समरी आ जाएगी, इंडिविजुअल, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल,
हिंदी वाला वर्जन लिया है, 500 कॉस्ट है, 90 जीएसटी है, 590 इज द टोटल पेएबल एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी एटसेट्रा, एंड नाउ से पे नाउ। आप जैसे ही पे नाउ करेंगे, आप एक गेटवे पे चले जाते हैं एक्सिस बैंक के, वेयर यू कैन पिक अप either through a direct credit card, debit card, or net banking, any of your banks, and do the payment. This is how the whole thing will go, right? So this is how you have to register to this program. And now I leave the floor open for discussions, your questions. I'll be very happy to answer them. Are there any questions? Anukati? Yes, sir, there are quite a few questions. Yeah, please tell me. Yeah. So the question is that if I'm associated with multiple direct selling companies, will one certificate be enough? So the certificate that you're going to be getting will have a stamping of that particular organization. If you're in AGIC, it will be in AGIC. If you're Oriflame, it will have Oriflame. So here, depending on which company you want to take the certification on, it will be coming like that. It is company, it is co-branded with the organization whom you are representing. Co-branding hai. Okay. So the other question is something I've asked before, but they're saying the question was not understood. They're saying that they want to give their name. So the Enagic distributor ID is in their wife's name, but since they operate the ID, they want the certificate in their name. The husband wants the certificate, but they don't have their own ID. Enagic one. So they'll have to, take confidence of Enagic, and because we do a cross check, we do a cross verification with Enagic on the people who are registering. So if Enagic is aware that you are operational with them, they will permit you. All right. Next is what are the passing marks of this exam? 70%. And if I fail? You will have to give a reassessment by paying the 500 rupees fees again, get re-registered, undergo the program again. But let me tell you कि मैंने almost negligible number of people fail in this exam, because in the orientation itself, orientation के अंदर ही बहुत सारे questions हैं जो direct database में से आते हैं, जो main exam का होता है. तो आप सारे questions से expose हो जाते हैं किस type के questions आ रहे हैं अगर आपने ढंग से किया है, right? This is how the whole structure is there. तो आपको problem होगी नहीं, but otherwise 70% is the passing mark. और अगर आप fail हो जाते हैं for some reason, you'll have to give, you have to reappear in the whole process. Okay. Next question is, can I start this program anytime? Anytime. Right now, after this session is over, just log on and get your email ID, get your, what should I say, the login password, and start from next 1 hour. That's it. Next is this program designed for continuous learning, or it's a short-term particular period of time? It's a short term. It's a short term 5 to 6 hours program. And the whole objective is that you should get certified. The objective is not on continuous learning. Continuous learning is taken care by your organization. In AGIC, आपके continuous learning पे ध्यान रखता है. This program is only and only pertaining to your achieving government certification. The purpose is government certification. If I'm employed, is there any problem in me getting this certificate? No, absolutely not. It has no correlation with your employment. I already have this certification from another DSA company. Do I need it again from Enagic? See, if you are promoting Enagic products and you have to, so you can't be presenting an Modi Care certificate to an Enagic customer, isn't it? So you'll have to take a recertification for yourself.
It's a co-branded certificate. Okay, next question is that अगर ये प्रोग्राम मोबाइल पर हो तो ज्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि लैपटॉप में हमारा हिंदी कीबोर्ड नहीं होता है. नहीं, लैपटॉप पे तो मैंने आप मोबाइल के ऊपर तो मैंने आपको बोला ना कि आप इसको स्टडी कर सकते हैं. जो जो 6 घंटे का ओरिएंटेशन है मोबाइल पे आप कर सकते हैं उसको. पर एग्जाम की कंडीशन है कि आपको वो कंप्यूटर पे ही देना पड़ेगा, लैपटॉप पे ही देना पड़ेगा. देयर इज नो चॉइस. दैट्स बाय द डिजाइन, बिकॉज अदरवाइज हाउ विल योर invigilation happen? It's a government certificate coming. They want to be vigilant about it. All right. So the course can be done on mobile, but exam only and only on a laptop or a computer with microphone and camera. And just to tell you, for the examination, you don't have to type anything. You just have to click on the correct option. It's a multiple choice exam. Yes, absolutely. Need for Hindi keyboard. Thanks for adding, Anupati. Next is, can a person working in the government sector get this certificate? Of course, of course. You could be working in government, you could working private, anywhere. There is no restriction on that. Anyone can take it, just anyone. All that is needed is you have to be registered with NAGIC for doing this thing. And there you are. A person who is not linked, please understand, a person who is not linked to any of these IDSA companies cannot get this certificate. You cannot. Will not permit. If you are a government servant, but registered with IDS with, let's say, NAGIC, yes, you can take. Your government job will not come in the way. Next is, can I have this course in both languages? You can choose either Hindi or English, one of them. Well, you can buy both. And you can buy both. If you're so happy, you can buy both. The expense will be double of yours. So at leisure time, you can look at the Hindi or English, whatever. That is all right. Next is that, after I have done the registration and submitted the fees, in how many days do I have to give the exam? I said upper limit is 30 days. Within 30 days, you have to finish the program and fill up the form and apply for giving the assessment, the government assessment. And the assessment, after you press the final button, it will come in after 4 days. After 4 days of waiting, your exam will happen. So you have, I mean, I have seen people finishing it in 1 day. I told you, somebody in Varanasi did that and came back to us saying, "Ki mera to kar liya, I have done it." And then he filled up the form, and in 1 day, he was ready to give the assessment. So in 5 days, he was done. But that was the fastest. I'm not saying you please do it that fast. That's not required. You take your time. But normally I've seen people finishing in 10 to 15 days. 10-12 दिन में खत्म हो जाता है आराम से. धीरे-धीरे करिए without burdening yourself, without affecting your work, your business. Whenever you have time, just sit down and it's a very interesting hearing. It's the videos. Very interesting. Once you see them, you'll understand what I'm saying. With very professional voice coming, with a light music coming from the back. So it is very engaging to actually look at them. All right. Can we watch the videos multiple times? Any number of times. Any number of times. 10 times, 50 times, your choice. During the 30 days, all is yours. Do as whatever you want to do. But one thing very important, you cannot give your login ID to your wife or to anyone else in the network, because wahan pe bhi it's artificially intelligence enabled. Moment it detects that this particular ID was used by you and you have given it to someone else and someone else is using it, it will jam, it will freeze both the accounts. It will not let you go move forward. It will not leave the other person work. You'll have to call up the call center, talk to them, give explanation. There's a lot of जमेला around it. तो आप अपनी आईडी अपने तक ही सीमित रखेंगे, किसी और को नहीं देंगे. वहां पे जैसे ही आपने दी, नो टाइम द सॉफ्टवेयर विल डिटेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अराउंड, वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपने किसी और को दे दिया, दोनों अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे. आपको बस अपने दायरे में चलना है, अपनी बाउंड्रीज में चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि AI enabled सिस्टम सब तरफ इसमें लगे हुए हैं.